So today we will start linear regression. We have already done the topic correlation analysis. Now we will start doing the topic linear regression. So what is linear regression? The term regression regression का meaning क्या है? The term regression means stepping back to the average. Means stepping back towards the average. Actually, it is the average relationship between the two variables, right? And it is given by, who gave this concept? By British biometrician Sir Francis Galton. So this concept was given by British biometrician Sir Francis Galton. In between, this was a tenure about from this to this, right? So actually, what is that? Why we use regression? Correlation just give us the idea about what is kind of numerical correlation between two variables, how the variables are linearly correlated with each other, how much. So because you have already done R, you have already done rho, so the values are lying between -1 to 1. So correlation doesn't tell about what is the exact relation between x and y, which is the independent variable, which is the dependent variable. We can't judge these things through correlation analysis. So that's why the concept of regression has been introduced. So what is the meaning of linear regression? That was a dictionary meaning of regression, that stepping back towards the average. So by regression, we mean average relationship between two variables. Basically, we are talking about here two variables. It may be more than two or more variables, right? Suppose we have the variable 2, x and y, or y and x. कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? If suppose x is an independent variable, then in case we will take y as a dependent variable. If y is independent variable, you will write the word variable, then x you will take as dependent variable. So you can write as x on y on x. It means x is the independent variable and y is the dependent variable, right? And one of these variables is called dependent variable. अब यहाँ पे अगर y dependent है, ठीक है जी, y is a dependent variable. इस case में if I have taken the two variables x and y, and x is taken as independent variable and y is the dependent variable or the explained variable. It is called explained variable or response variable. So many names. Response variable. One more name, or predictor variable. Right? Predictor variable. So either we are talking about explained variable, response variable, predictor variable, or dependent variable. It means we are talking about the dependent variable. And independent variable is called explanatory variable. It is called explanatory
variable, right? So in this case, if y is the independent variable, so in this case the y will be written as, y will be called as explanatory variable, right? And here if x is dependent variable, it means it is explained variable, it is response variable, or this is predictor variable, right? So independent के बिहाफ पे जब dependent निकाला जाता है, right, then this concept comes under the regression analysis and the relation is linear. So we are working on the linear regression, not on the curvilinear regression, right? So this is the meaning. So meaning was, by regression, we mean average relationship between two variables or more variables. Basically, when we are talking about linear, so we have only two variables, x and y. Now, what is regression analysis? Regression analysis. So regression analysis gives a mathematical, measure of the average relationship between two or more variables. So जैसे correlation analysis में क्या मिला हमें? Correlation analysis gives a mathematical measure to find the linear relationship between two variables. On the same way, regression analysis gives a mathematical measure of the average relationship between two or more variables, right? In terms of the original units of data. In terms of original units of data, right? So this is now we will talk about the types of regression analysis. Next heading we will get types of regression. Right. So broadly we have the two terms. The one is called the simple regression and the second is multiple regression. Right? So in simple regression, we take the average, we find the average relationship between two variables only. So this is the average relationship between two variables, right? And in between, if you are talking about x and y, then the one is independent, the other is dependent. So take it vice versa. If you are taking x as independent, y is dependent. If y is independent, x is dependent. And in the multiple regression, there are more than one explanatory variables. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही x अगर आपका इंडिपेंडेंट है, राइट, x इज इंडिपेंडेंट यानी x क्या है, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल है, राइट, इट इज अ एक्सप्लानेटरी, एक ही वेरिएबल है जो एक्सप्लानेटरी है, y क्या है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है. लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में देयर आर मोर देन one explanatory variables, right? For example, फार्म आउटपुट. अब एक फार्म है, फार्म हाउस है, उसमें जो हमने आउटपुट देखनी है वो किस पे डिपेंडेंट है, फार्म आउटपुट is related to the application of fertilizers, रेनफॉल. ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो भी आउटपुट है, जो यील्ड है, राइट, उस जो यील्ड
किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फर्टिलाइजर्स कैसे यूज किए हैं, रेनफॉल कैसे हुई है, ठीक है जी। एंड एनी अदर फैक्टर यू कैन टेक, यहाँ दे हैव टेकन द नंबर ऑफ फ्लोइंग्स, number of flowings. So output is dependent upon fertilizers, rainfall, number of flowing. So these are the explanatory variables, right? Next. So this is the first type of regression we have taken as it is a simple regression. Then we talk about the multiple regression. Simple regression, we have only one explanatory variable. Multiple regression, we have more than one explanatory variable. So we have another category types. This is the first type. Then the second type, it is linear and non-linear. Linear regression. And here you will write non-linear regression. Right? So, what is the linear regression? Linear regression means the dependent variable varies at a constant rate, with a change in the independent variable. The change in the independent variable. Right? The constant rate of change, ये जो constant rate of change है, that can be absolute और in terms of rate of percentage. अब जैसे y है, मैं y अगर डिपेंडेंट लेती हूँ तो मैंने y को ले लिया 4x plus 3. Suppose करो I have taken the relationship between two as it is a linear relationship. So y is dependent upon the value of x. So whatever the value of x you will put. So when you will put x is equal to 1, what y you will get? That is 2 into 1 plus 3. What you will get? This is 5. When you will put x is equal to 2, this is y is equal to 2 into 2, 4. 4 plus 3 is 7. देखो कितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है, यानी कांस्टेंट रेट, किस कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है? ये दो के कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है. अब व्हेन यू विल पुट x is equal to 3, then what y you will get? 2 into 3, 6. 6 plus 3 is 9. So 5 plus, आगे 5 था, फिर 7 है, 9. अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं when you will put x is equal to 4, what y you will get? 11. So what is the difference between the values of y? Y की values क्या आ रही हैं? Y you are getting 5, 7, 9 and 11. So कितना डिफरेंस है दो हर एक वैल्यू में? दो का डिफरेंस है. It means constant rate. किस कांस्टेंट रेट से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है विद द चेंज इन द इंडिपेंडेंट. आप यूनिट चेंज कर रहे हैं, एक एक यूनिट, एक्स में एक यूनिट चेंज किया और वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज. राइट? एंड in the non-linear regression, now I'm talking about the non-linear regression. The dependent variable, the explanatory variable, you will write in the changes that the explanatory variable changes at varying rates. यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट वेरिंग रेट्स. Sorry, you will write here explained variable, not explanatory, explained variable here. क्योंकि चेंज किसने होना है? डिपेंडेंट वेरिएबल ने. द एक्सप्लेन्ड वेरिएबल चेंजेस एट वेरिंग रेट्स with a given change in explanatory variable.
इसमें कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, इसमें जो है वो वेरिंग है, इसमें कोई पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा जो आपकी y की वैल्यू आएगी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सिंपल आपको y और इसमें रिलेशन क्या है, नॉन लीनियर है, मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी, कितना ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, when you will put x is equal to 1, y you are getting 1, when x is equal to 2 you are getting y is equal to 4, when x is equal to 3 you are getting y is equal to 9, when you are putting x is equal to 4 you are getting y is equal to 16। डिफरेंस क्या है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज के साथ इसमें चेंजेस नहीं आ रहे। So similarly you can take the log of x आपने ले लिया, या आपने e raised to power x ले लिया। So ये constant rate of change के साथ जो है इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा। So I'm giving you the example. So you can write for the non-linear regression example for non-linear regression. So mathematical example I have given, I am giving you the practical example, real life example बता रही हूँ। For example, the output of, this is a real life example. For example, the output of wheat increases rapidly with the application of, with the application of initial dose of fertilizers, and thereafter it decreases at falling rate, right? So the relationship in such cases, when shown on graph, अगर हम ग्राफ के ऊपर शो करें, when shown on graph will yield a curve, अब इसका बड़ा सुंदर एग्जांपल बेटा ड्यू टू पेंडेमिक है। अब पेंडेमिक में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो रही है, वो ये नहीं है अब रोज, अब पहले था कहाँ 1000 में केसेस आए थे, अब तो लैक्स, अब तो 4 लैक्स तक पर डे केसेस पहुंच गए हैं, तो एक एक्सपोनेंशियल उसमें फ्लो आ गया। इट मींस y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, अगर हम इसको इसकी फिगर बनाए तो बेटा आपके पास ये इस तरह से आएगा। सो दिस इज नॉट अ लीनियर रिग्रेशन, दिस इज अ कर्व लीनियर रिग्रेशन, कि एक कांस्टेंट रेट से y की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, आपने थोड़ा सा कुछ किया तो एकदम से जो है वो, अब एक ही मान लो सपोज करो एक ही पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो किसी गैदरिंग में चला गया है, वहां पे 100 लोग हैं, तो मोस्ट मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि कम से कम, अगर देखो इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो मोर देन 50 लोगों को इन्फेक्ट जरूर करेगा, जितने लोगों को वो डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है जी, अगर उन्होंने प्रिकॉशन, ये सारे पैरामीटर साथ में चलेंगे, ठीक है। तो वो जो एक इंक्रीमेंट है नंबर ऑफ पीपल्स इन्फेक्शन होने में, वो एक्सपोनेंशियल चल रहा है, वो किसी कांस्टेंट रेट से नहीं जा रहा, राइट। So this is the case of non-linear regression. So इसी तरह यहाँ कह रहे हैं output of the wheat increases rapidly with application of initial dose of fertilizer। अपने घर में देखिए, सपोज करो आपने किचन गार्डन लगाया है, ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर्स नहीं दे रही हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन when you put the fertilizers, we apply the fertilizers, डेफिनेटली वो एकदम से एक्सपोनेंशियल उसमें लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल ग्रो जो है वो आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो एकदम से उसमें डाउनफॉल आ जाएगा। सो दिस इज द केसेस, this is an example of nonlinear regression, right? So now the next question is regression lines. So actually what we are studying, हमने क्या पढ़ना है, we will only talk about the simple linear regression, right?
So linear regression, it is a linear average linear relationship between the two variables. So जब दो variables की, it's lines, not linear, it's lines. So we will, what is a regression lines? अब y एक line होती है y on x, एक होती है x on y. So we will study about these two lines. सो y on x जब लाइन आप कह रहे हैं, ठीक है, लीनियर की बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लीनियर रिलेशनशिप, नॉट द नॉन लीनियर. सो y इज इक्वल टू, इफ आई विल राइट ax प्लस b, राइट, और x is equal to ay plus b. In this case, y is dependent explained variable. This is the explanatory variable. जो explain कर रहा है वो explanatory है, जो explain हो गया है उसके through, that is the explained variable, right? Dependent variable, response variable. So ये y on x भी हो सकती है, ये x on y भी हो सकती है. It means जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये कोई ना कोई लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. अब अगर मैं सिंपल देखो, सिंपल y इज इक्वल टू ax लिखती हूँ, तो मुझे पता है दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट, दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट. इफ आई विल राइट y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो बेटा ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती, ये यहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें स्लोप आ जाती है, राइट. तो स्लोप जो है ये जो है ना, ये एक वेरिएशन आ जाती है प्लस बी करके, यानी इतना ये जो है ओरिजिन से ट्रांसपोज हो गया है y, ठीक है जी, ऑन द y एक्सिस. So I am coming to the definition, exact definition of regression lines. So regression line is the line, you will write regression line is that line which gives the best estimate of one variable y for any given value of other variable x. Regression line ने क्या करना है? It is the line which gives the best estimate of the variable y. अगर y x के ऊपर dependent है, and if y have some kind of relationship, y is equal to ax plus b, then by putting the value of x, we are getting the value of y. तो वो जो y की value है, that will be the best estimate of the variable y. ठीक है जी? Now we have two lines of regression. The one is y on x, the other is x on y. Types of regression lines. We have two regression lines. One is y on x and the other is x on y, right? So line of regression y on x. So line of a regression y on x is the line which gives the best estimate, for the value of y for any specified value of x. रिग्रेशन लाइन देखो, इन जनरल जो हमारे पास कोई भी लाइंस होती है बेटा, y इज इक्वल टू, आपने ये लाइन लिखी, यू कांट से इट इज रिग्रेशन लाइन, राइट. रिग्रेशन लाइन तभी बनती है व्हेन इट गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ y. y की जो वैल्यू आनी चाहिए,
जो हम निकाल रहे हैं वो बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए y का फॉर एनी गिवन स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ x, राइट? So, and similarly, same you will repeat the line of regression x on y is the line which gives the best estimate for the value of x for any specified value of y. It is a vice versa, you can write. ठीक है जी, आपने इसको चेंज कर लेना है, जहां जहां आपका x है वहां y हो जाएगा, जहां y है यू विल रिप्लेस इट बाय x. y on x में x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, y को एस्टिमेट करना है, बेस्ट एस्टिमेट करना है, इसमें x को बेस्ट एस्टिमेट करना है, राइट? इफ x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? So what is the meaning of best fit या best estimate? Now, these are the lines of best fit. So now what is the meaning of lines of best fit? ठीक है जी? The best fit means, yeah, best estimate means that the deviations between the given or observed values of the variable and their corresponding estimated values are small as possible. What does it mean? The best fit means that the line of best fit means that deviations between the given or observed values of the variables and their corresponding estimated values are as small as possible. Suppose करो एक y की वैल्यू आपको दी है, y is a dependent variable. एक आपने निकाल ली, जो वैल्यू आप निकालते हो ना, इट इज डिनोटेड बाय कैप, इसको कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू. इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड वैल्यू. इन दोनों के बीच की डेविएशंस यानी y माइनस वाई कैप, राइट, ये क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. सो अगर इन दोनों की जो डेविएशंस हैं वो क्या होएंगी? मिनिमम होएंगी. इट मीन्स जो हमने लाइन को ही फाइंड आउट की है y इज इक्वल टू ax प्लस b, देन दैट दिस लाइन इज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, राइट? आगे जाके हम करेंगे भी हाउ टू प्रूव कि हमने किस तरह से लाइन ऑफ बेस्ट फिट फाइंड आउट करनी है, राइट? चलिए, so now next is the methods of constructing regression lines. Next topic is methods of constructing the regression lines. जो सबसे important है, that is the method of least square. Method of number one, method of least squares. Method of least, इसका article as it is आता है, explain the method of least square to construct the regression lines, right? You can write the question also और करके explain the method
of least square for finding or constructing regression lines. Two words है, the one is least and the other is squares. इसका मतलब कोई square हमें find out करना है और उसको हमें minimize करना है, right? So let us start the proof. Method of least square. Let us suppose that. Let us suppose that in the bivariate distribution, bivariate distribution means we have the two variables xi and yi, having the values I running from 1 to n and yi also running from 1 to n. I is the same, that's why simple I running from 1 to n. Y is dependent variable. And X is the independent. You can choose anyone. There is no hard and fast. You can take X as dependent, Y as independent variable. Let the line of regression of y on x be. I'm taking मैं बार बार line ले रही थी आपके सामने y is equal to ax plus b, ठीक है जी? So similarly, we will take capital Y is equal to a plus bx. We have taken this line of regression. So here, what is A and what is B? We don't know. We have to find the value of A and B in such a way that the line, the value of Y will be will have a best estimate. So number one. So if you are putting the value of A, अब A और B नहीं पता आपको, ठीक है? If you are putting the value of A and B, अब suppose करो मैं A और B को कोई भी value लगाती हूँ, मैंने लगा दिया 2 plus 3x, ठीक है? मैंने लगा दिया 2 minus 3x, कुछ भी लगा सकते हो, y बन गया आपका 4 plus 2x. So whatever any value on the real line, you can put the value of A and B. It means this is a family. ये एक line नहीं है. It is a family of straight lines. This is a family of straight lines. Right? So we have choose the line of regression y on x as y is equal to a plus b. Next, we will write the equation this y is equal to a plus bx. The above equation represents a family of straight lines for different values of the arbitrary constants a and b. Now the problem is to determine A and B so that the line y is equal to a plus bx is the line of best fit. So इस तरह से A और B ढूंढने हैं कि this line becomes the line of best fit, and when it will become the line of best fit if the deviations between the actual value and the estimated value of y is minimum. So you will underline the word that you will put in inverted commas so that it is the line of best fit. Now, what to do? Now you have the equation y is equal to a plus bx.
y की वैल्यूज कितनी है, y1 y2 yn, x की क्या वैल्यूज है, x1 x2 xn, सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे. सो यू विल राइट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in one and summing this for n. सारी वैल्यूज पुट कर दी, फिर सम अप कर दिया, दिस विल बिकम समेशन yi. n a के साथ कोई वेरिएशन नहीं है. हाउ मेनी टाइम्स इट इज एडेड, n टाइम्स, सो दिस बिकम्स na. So b into summation I running from 1 to n, here you will get x. Let it be number. Now again from 1, multiply equation number 1 by capital X by capital X. So we will put, this is capital XY is equal to AX plus BX square. Again putting all the values, you will again write putting all the values of x and y and summing. यही same line यहाँ पे फिर repeat हुएगी. ठीक है जी. So what you will get summation I running from 1 to n xi yi is equal to a into summation xi I running from 1 to n plus b into summation I running from 1 to n xi square. So this is number 3. So the next screen I will write all the equations that we have got. ये आप लेके चले थे. This was number 1. Number 2, you have got summation I running from 1 to n. yi is equal to na plus b into summation I running from 1 to n xi. And the third equation is summation I running from 1 to n xi yi is equal to a into summation I running from 1 to n xi plus b into summation I running from 1 to n xi square. So these we have got, this we have assumed, and from this equation number 1 we have derived equation number 2 and equation number. So this is today's today's all about today's lecture. So we will continue tomorrow with the least square method.